People should not confuse investing with saving. पैसे बहुत आ गए हैं जेब में, अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, that kind of thing. एक तो थोड़ा रियलाइजेशन हो जाता है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, सेविंग ही नहीं है, या मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं शायद वहाँ पहुँच ही नहीं पाऊँगा. When it comes to my money, I may take emotional decisions at crucial times. डिसीजन मेकिंग में ब्रेन के दोनों पार्ट यूज़ हो जाते हैं. कुछ भी आप सवाल डालो इंटरनेट पे, उसका जवाब आ जाता है. वो सही है गलत है मालूम नहीं, बट वो जवाब आ जाता है. इधर उधर का सुन के, अभी मार्केट ऊपर है तो मैं यहाँ से निकालता हूँ, इधर डालता हूँ, इधर से निकाल के यहाँ डालता हूँ. This is not something which is taught in schools and colleges. Not just the media, of course. It's of course also your brother-in-law, your friend, your office colleague. All these guys keep talking to you. You tell them, I have given it to my advisor, he is doing like this. Then there is going to be somebody, he will criticize saying, ये कौन सा scheme दिया है, इसमें करना चाहिए था, मेरे को इसमें इतने मिले. Welcome to the Investwell Show. Today we are going to discuss about investors' journey from financial anxiety to financial peace. Today we are in Mumbai. We have with us Mr. Yogin Sabnis. Yogin ji, welcome to the show. He's the founder of VSK Financial Planners, and with over 3.5-4 decades of experience, sir has been a life planner, a certified financial planner, and also a licensed instructor. He's been a speaker at various forums and a trainer to a several set of investors and advisors both. So I will welcome you again. In this session, we'll be discussing with sir his experiences with investors in their investment and financial journey. So what kind of investors do you usually come across? You know, what kind of preconceived notions they may have regarding money or investing? Well, it depends on their age. You know, the youngsters, most of the time, they are influenced by what they see or hear on the internet, the YouTube channels, and not all the information is the correct information. So many times it's misinformation. The older people, the people who are already in their 40s and 50s, they are more old school. So even now, even today, a lot of them have the mindset that it should be only fixed deposits and gold and real estate. Mm-hmm. So it's a task to really, I would say, I consider my first job in any interaction with a prospective investor is to educate him financially. Mm-hmm. And to, so personal finance is a huge, there is a huge amount of ignorance about personal finance. Mm-hmm. Let's take a step back and understand how important is money. Well, that depends on your perspective, really, because to some, money is everything. Mm-hmm. To some, money is just a medium, to satisfy their needs. Mm-hmm. I think money is a conduit. It can't be an end in itself, but it is a powerful tool. I mean, it's a resource which helps you get whatever you want. So to that extent, money is very important. And if you take it forward, how important is investing? Well, you can't get money without investing. People should not confuse investing with saving. Mm-hmm. We in India, we are a nation of savers. I mean, it's inborn. It's drilled into us, right? That whatever you earn, you spend less than what you earn. So you will save. But that saving money and keeping it in a bank account is not enough. You have to invest it properly to reap the benefits of that saving. Right. So how soon or when do people realize that they need to plan their investing, or I would say plan what they do with whatever saving they have? So when do generally people realize
this aspect? I don't know. Some people just don't realize it throughout their lifetime. But I would say most of them, if they realize in their life, it would be after they get married and, when they become responsible, when they realize that they have a responsibility towards their family. So you're saying addition of responsibilities, Yes. generally with the first job or with the marriage or a first It's job. with the marriage or the first kid, not the first job. Right. Okay. In fact, when they get into a job, it's a completely different scenario. Earlier, they were surviving on pocket money. All of a sudden, they get a salary, which is a very high income for them, and somebody can go berserk, with that. Exactly. तो जैसे पैसे बहुत आ गए हैं जेब में, अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, that kind of thing. तो नॉर्मली मॉल्स में जाके देखते हैं तो यू फील जो यंग क्राउड ज्यादा दिखता है तो यू फील दे हैव क्रेडिट कार्ड, खाओ पियो पार्टी करो. so that's the first thing which comes into the mind, like becoming free. Yes. So वो responsibility तभी नहीं आती. Responsibility will come if it has to come after marriage or after they have their first kid. Right. But then how does a investor go about doing this? Because सबके दिमाग में तो होता है कि मुझे कुछ करना है, कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया तो अब मुझे कुछ करना है. But then most of the people get so busy in their day-to-day work and earning that part, that this part kind of gets neglected, and it's probably psychology or whatever you may say. But ये थोड़ा सा एकदम से ऑटोमेटिक आता नहीं है दिमाग में. उसी के लिए तो हम जैसे लोग हैं. What I would suggest to anyone who was very serious about planning his future financial life is you have to get a proper professional financial advisor. जैसे आपको if you fall sick, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, right? If you have a problem, legal problem, you go to a lawyer. This is a problem for which you require a professional. And even if you have the understanding, of money, of investments, still you require a professional advisor, because your emotions play a huge part in your financial decisions. तो आप अगर जानकार भी होंगे कि मुझे पता है ये कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, कितना देर करना है एंड ऑल दैट, फिर भी जब when it comes to my money, I may take emotional decisions at crucial times. So when I say me, मैं खुद के बारे में भी बता रहा हूँ, because financial advisors are not immune to emotions. With their money they could be emotional. Okay. तो अगर फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ये सच है तो आम जनता के बारे में तो ये डेफिनेटली है. करेक्ट. बट वो रियलाइजेशन आने में कई टाइम लगता है. या और बहुत बार ऐसे होता है कि बिकॉज इंटरनेट इज देयर, कुछ भी आप सवाल डालो इंटरनेट पे, उसका जवाब आ जाता है. वो सही है गलत है मालूम नहीं, बट वो जवाब आ जाता है. और आप वो जवाब, मतलब मल्टीपल जवाब आते हैं, एंड इफ यू रीड ऑल दोस, देन दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी मेनी टाइम्स. देन यू आर कंफ्यूज्ड, राइट? एंड ओके, इफ यू गो विथ वन पर्टिकुलर थिंग, और उसमें भी मैं जो बोला इमोशंस का, वो वही है कि when I am reading all these answers, if one answer appeals to me कि ये मेरे लिए appeals, मतलब क्या, ये मेरे लिए मानना easy है, that may not be the correct answer, but it is an answer which I like. हाँ, because तो वो डिसीजन मेकिंग में ब्रेन के दोनों पार्ट यूज हो जाते हैं. एक पार्ट कुछ बोलता है, दूसरा पार्ट कुछ अच्छा लगता है सोच लेता है. वही मैं बता रहा हूँ ना इमोशंस के बारे में. We are emotional about our money. We are emotional, and those emotions play a part in our decision making. So जो answers मुझे अच्छे लगते हैं, they are catering to my emotions. That is why I think they are the right answers, but they may not be. And that's the reason I am saying you require a financial advisor. Correct. Well said. How does the journey begin? Suppose ये realization हो भी गया investor को, and वो किसी advisor के पास पहुंच गया. How does the process begin? In short,
from a fresh person who comes to you, say आप अपना experience ही share कर सकते हैं. How do you take him across through preparing a plan? Yeah. So when somebody comes to me, the first thing is to understand his psyche. Now that is what a financial advisor will do. But if an individual has to think for himself कि मैं कैसे करूँगा, मेरा financial journey कैसे मैं how will I go with it? The first thing is you make a budget. I mean, you will write down your expenses. कितने expenses हैं मेरे monthly, और उसमें then you can bifurcate your essential expenses and your discretionary expenses. जहाँ मैं महीने में 2 बार मॉल जाता हूँ, मूवी देखता हूँ, बाहर खाने जाता हूँ, all those things, all those you have to tabulate कि ये मेरा monthly expense है, ये मेरा income है, okay? तो whether जो savings मेरे हैं, whether they are adequate. So actually you should first think of the saving part, and then जब भी आप tabulate करते हो आपके expenses, तो उसमें आपको after putting it down you realize कि you may be overspending somewhere. That's the first lesson. कि okay कि ये मुझे कम करना चाहिए. वो कागज़ पे लिख के ही वो realization आता है, उसके पहले नहीं आता है. तो वो पहले करो, expenses आप list करो, expenses list करने के बाद उस पे गौर करो, and see if you feel कि कहीं ज़्यादा कहीं expense हो रहा है एक जगह पे, try and control those expenses. उससे savings आपका savings amount आपको clear हो जाएगा. बाद में वो savings amount आप invest करोगे. फिर वो invest कैसे करना है, उसके लिए हम लोग जब भी बात करते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर से, तो वी टॉक अबाउट रिस्क प्रोफाइलिंग कि हर एक का एक दिमाग में एक फाइनेंशियल डीएनए होता है, उसका रिस्क डीएनए, कि वो बात कुछ भी करे, बट वो डीएनए कैन बी इंटरप्रेटेड और इट कैन कम आउट थ्रू सर्टेन रिस्क प्रोफाइल क्वेश्चनर्स. तो उससे हमें पता चलता है उसको रिस्की एसेट्स, अभी रिस्की मतलब कौन से रिस्की एसेट्स, हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, वो कितना उसको एक्सपोजर देना चाहिए और कितना उसको सेफ इन्वेस्टमेंट्स में रहना चाहिए. तो ये पहला उसको तय करना है. अगर उसको रिस्क प्रोफाइल समझो वो कर नहीं पा रहा है, ही डजंट हैव एक्सेस टू एडवाइज़र, देन इफ़ ही हैज़ टू डू इट हिमसेल्फ, व्हाट ही कैन थिंक ऑफ इज़ कि जो पैसा मैं रिस्की एसेट्स में डालूंगा वो मैं भूल जाऊंगा, वो मैं देखूंगा नहीं अगले 10 साल 15 साल 20 साल वॉट एवर. ओके, नाउ बिकॉज ही डजंट हैव अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम जस्ट मेकिंग इट, आई एम ओवर सिंप्लीफाइंग पॉसिबली. तो पर ये है, मतलब ये जो पॉइंट है कि ही हैज़ टू, इट्स लाइक फिल इट शट इट फॉरगेट इट, जो हीरो होंडा का ऐड हुआ करता था वैसे है वो. तो यू डोंट लुक एट इट. तो अगर जितना पैसा वहाँ डाल सकते हैं उतना वहाँ जाना चाहिए. आपको जो पैसा आपको लगता है कि नहीं ये मुझे अगला 2-3 साल में लग सकता है, या कोई भी इमरजेंसी फंड तो होना चाहिए, वो पहली बात है. इमरजेंसी फंड विल बी एटलीस्ट 6 months ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस, तो वो तो होना चाहिए. और प्लस whatever money you think you may require in the near future. When I say near future, I am saying 3 to 5 years at least. वो छोड़ के बाकी सब ये स्टॉक्स में लग सकता है. राइट. तो जब ये रियलाइजेशन हो गया और थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया कि मेरा रिस्की एपेटाइट कितना है रिस्क का एट्सेट्रा, उसके बाद वाला जो पार्ट है वहाँ पे एक तो थोड़ा रियलाइजेशन हो जाता है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, सेविंग ही नहीं है, या मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं शायद वहाँ पहुँच ही नहीं पाऊँगा. तो उस सिचुएशन में हाउ डू वी एड्रेस टू द इन्वेस्टर कि नॉट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, बिकॉज जनरली जो फाइनेंशियल प्लान का आउटकम आता है दैट इज़ सो ग्लेयरिंग दैट पर्सन गेट स्केयर्ड कि ये तो काइंड ऑफ अनअचीवेबल हो गया ना. अनअचीवेबल, सी इफ़ वी आर टॉकिंग ऑफ यंगस्टर्स, उनके लिए तो ये गोल्डन टाइम है शुरू करने के लिए. ओके, आप जो सिनारियो बात कर रहे हैं दैट कुड बी फॉर पीपल इन देयर 50s और पॉसिबली इवन लेटर. अचीवेबल नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता.
देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन जो शुरू में आए हैं, द वंस गाइज हु आर इन देयर 20s and 30s, उनके लिए तो देर तो जरा भी नहीं हुआ है. They can start even, but earlier they start, the bigger advantage they have. It's just a matter of compounding. तो बात ये है कि any person who is starting out in life, और जो मेरे पास आते हैं ये यंगस्टर्स बात करने के लिए, उनको मैं बोलता हूँ कि you are lucky because you have at least 30 years of working life ahead of you. Right. In this 30 years of working life, your income is only going to increase. Correct. Okay, barring certain some mishap को जॉब चला गया वगैरह, वो हो शुरू में हो सकता है, but as you settle down in your career, you will not have that problem. Plus your income will continue to increase and the expenses will not increase in that manner. मतलब आपका सेविंग इंक्रीज होने का पोटेंशियल है. अगर वो सेविंग आप पूरा इन्वेस्टमेंट में डालो, ओके, एंड then you have a potential to grow really fast and really big. Wealth creation जो बोलते हैं हम, वो उनके लिए definitely हो सकता है for guys in their 20s and 30s. If they have understood that part initially itself. And if they have the discipline to do it. Discipline to, you know, every time they get an increase, कि इसमें से मेरा सेविंग्स में मैं कितना बढ़ा सकता हूँ, इतना बढ़ गया, अभी उसमें से इन्वेस्टमेंट में कौन सा कर सकता हूँ. तो इन्वेस्टमेंट की ऑफकोर्स जानकारी होनी चाहिए. तो वो करने के बाद एज द इन्वेस्टमेंट्स ग्रो, नेचुरली पावर ऑफ कंपाउंडिंग टेक्स केयर ऑफ द रेस्ट. एंड देन फिर वो सी प्रॉब्लम क्या होता है कि एक 30-year-old ही स्टार्ट्स ए मंथली इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम. ओके, 5 साल 7 साल में अगर उसका इन्वेस्टमेंट अच्छा चल गया, ग्रोथ हो गया, उसको वो बड़ा रकम दिखने लगी वो. ओके, अभी वो रकम उसकी नज़र में आ रही है, इन्वेस्टमेंट चालू है बट वो दिख रही है. मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, लग्जरी कार लेनी है. ओके, राइट, वो विषय शुरू हो जाता है. हाँ, देन ही इज टेम्प्टेड. ओके, what you cannot afford is to break that corpus. I'm not saying you deny yourself, but be reasonable in your aspirations. और आगे चल के वो बड़ी गाड़ी भी आएगी, but तुरंत, you know, it's like a growing tree, you're cutting off right in the this. But then that brings to the next question, फिर वो पैसा कब रिडीम करना, कब निकालना, वो एक क्लासिकल क्वेश्चन हो जाता है. बिकॉज सब लोग कहते हैं सेव करते रहो, छोड़ दो. बराबर. तो ये तो फिर निकालने का तो कभी कोई बोल ही नहीं रहा है. तो मैं अभी मेरी उम्र है एंजॉय करने की, तभी मैं नहीं कर रहा हूँ. वैलिड पॉइंट. तो मेरा कहना ये है कि सब में बैलेंस होना चाहिए. ओके, सो स्पेशली इसके लिए मैं आई एम टेलिंग द यंगस्टर्स जो 25, 30, 35 साल के उम्र के हैं, उनके लिए ये सब हो सकता है. और बिकॉज दे आर स्टार्टिंग अर्ली, दे डोंट रिक्वायर ए बिग मनी टू create wealth. Even with few thousands they can create wealth, because that thousands are going to get increased to lakhs in the years to come, and that lakhs, thousands and lakhs ultimately are going to get converted into crores of rupees and wealth creation. Just with time. Just with time. And inaction probably than action. Yeah, exactly. I think that's the good thing you have pointed out. Inaction, passive investing जो बोलते हैं कि do not interfere with your investment program. ज़्यादा इधर उधर का सुन के, अभी मार्केट ऊपर है तो मैं यहाँ से निकालता हूँ, इधर डालता हूँ, इधर से निकाल के यहाँ डालता हूँ, वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. वो एक बहुत कॉमन चीज़ होता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट सपोज जो भी 12% रिटर्न दे रहा है, एंड यू ऑलवेज हैव अ कलीग हु हैज स्लाइटली मोर. At least he boasts he has, you don't get to check. और वो जब ही लॉस करता है तभी he is not talking to you. वो तो डेफिनेटली होगा वैसे ही. But then you get tempted to change the investment pattern or investment product, so to say, from one to the other, and then to the third one. So you must be coming across clients. Yeah. So basically, so that's why I say कि when you are with an advisor, advisor
सबसे बड़ा काम क्या करता है, ऑफ कोर्स वो आपको रिस्क प्रोफाइलिंग करेगा, आपको बोलेगा आपका कितना पैसा सेफ में होना चाहिए, कितना पैसा आपका स्टॉक्स में होना चाहिए, देन ही विल कीप ऑन डूइंग रीबैलेंसिंग वो परसेंटेज के हिसाब से, ऑल दैट ही विल डू, एंड यू विल थिंक कि मैं उसको इसलिए पैसा दे रहा हूँ कि ये सब ये मेरे लिए कर रहा है. But the biggest amount, the biggest sort of earning or the biggest importance of his being present there for you is that he is protecting you from all these various media which is influencing you. Now, it's not just the media, of course, it's of course also your brother-in-law, your friend, your office colleague, all these guys keep talking to you. You tell them, I have given it to my advisor, he is doing like this, then there is going to be somebody, he will criticize saying, ये कौन सा scheme दिया है, ये इसमें करना चाहिए था, मेरे को इसमें इतने मिले. तो मिले मतलब हो गया है वो, ये ध्यान में रखना चाहिए, उसमें he will not continue to get that, number one. So secondly, investment advisors cannot predict how much money you will make. They will not even claim to make you rich. They will only say कि we will ensure that you fulfill all your financial goals. Of course, probably within a reasonable limits, मतलब whatever those are. And they will be able to tell you कि based on your savings program, based on your investing program, what sort of and of course your financial goals, whether you will be able to meet those goals upfront. But then doesn't this plan needs to be continuously revisited? उसको review या ऐसे कब होना है. That is why a financial advisor, you don't go to him once. He will create a financial plan, you will think कि हो गया मेरा ये. So financial plan is a blueprint for your or a roadmap for your achieving your financial goals. But what happens is your journey is not a straight road. There will be twists and turns. गड्ढे भी रहेंगे, अपने शहरों में होते हैं वैसे. And at that time you will get stuck. You won't know what to do. So a financial advisor, once you हम लोग we tell our clients, when new prospects, when they come to us, कि this engagement, we take it as a lifelong engagement. It is not a transactional engagement. कि हम अभी आपके financial health के जिम्मेवार हो गए. Okay, and that is why a financial advisor will always look at these things. And वो जो आप review की बात कर रहे हैं, वो तो होते रहता है, वो तो जरूरी है. That is a part of the we may not do anything. कि review does not mean taking some action. In fact, no action needed is also a very active advice. Taken difficult advice probably, because clients might feel कि ये तो advisor कुछ मेरे में interest ही नहीं ले रहा है. ऐसे नहीं है, ये शुरू में सब थोड़ा बताने वाला चीज़ है. When we onboard clients, we talk these things to them and we tell them कि this is what we do. And if we are not recommending any change, it is an active advice. It means we have gone through your situation and we find that everything is okay. The road has no twists and turns as of now. So let's go. जैसे कई बार डॉक्टर्स के साथ भी होता है ना, कुछ चेंज नहीं किया तो यू फील अनकंफर्टेबल. नहीं, पर वो नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. And if you have got this engagement with the advisor, you must rest assured that he is looking at it. You can ask him questions. You can ask him why he feels so, and he will give you a proper rational answer. He will give you logical answer. Correct. But कभी-कभी needs भी change हो जाता है. Suppose your salary has gone over some other bracket, your aspirations may change. वो होता है ना. इसीलिए रिव्यू का मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिव्यू नहीं है. रिव्यू का मतलब आपने यू हैव इंट्रोड्यूस मी एज अ लाइफ प्लानर, राइट? सो व्हाट डज अ लाइफ प्लानर डू? He in fact gives importance to the what is happening in the client's life. He doesn't, investments are routine for him. One part of the
But what he wants to know is what are the changes happening in your life. So changes could be anything. They could be good, they could be bad. Right? So whatever the changes are, the advisors will have a relook at the situation and recommend if there is anything that needs to be done about it. So this becomes just a subset of the whole journey. Yes. It's a life plan, financial plan, or investment We plan. call it financial life plan. It's a financial life plan, so to say. Right, exactly. Because I think that is something which is probably lacking with most of the people, because probably, as you were saying, this is not something which is taught in schools and colleges. So even people who are engineers, it's a pity actually, who have done very high qualified jobs, and they still become, kind of illiterate when it comes to their own financial management. No, and illiterate, and the more dangerous part is that they don't know that they are financially illiterate. They think कि मैं नेट पे जाके इसका हल निकाल लूँगा, कर लूँगा. And a lot of times the most dangerous part is they think trading is investing, which is the worst. Yes. But that again is like a lure. That is a lure for quick money. Yes. And I want to tell the youngsters here that you can never become overnight rich, except if you win a lottery, or somebody leaves you money, a rich uncle or somebody leaves you money. You inherit. And in both these cases, there is a very big likelihood that you will lose that money, because you don't know how to manage big money. Right. So you will be well served if you create your wealth out of your small savings by investing wisely. Right. It takes time. It takes time, but it is a certainty. Correct. It's a little boring way, but then. बोलते हैं ना, it's like watching paint dry. Exactly, because. और उसके लिए ही लोगों को कभी-कभी लगता है कि इससे मुझे नहीं मिलने वाला पैसा. एक्साइटमेंट से एक्साइटिंग कुछ करूं, ओके, तो उससे मुझे पैसा मिलेगा, बट इट्स नॉट ट्रू. वो प्रोबेबली बहुत यंगस्टर्स में तो रहता ही है कि मैं थोड़ा सा अमाउंट क्रिप्टोज में डाल दूं या किसी और चीज़ में डाल दूं, तो वहाँ शायद एक साल में डबल हो जाएगा. अभी तो कुछ है. यू मस्ट बी गेटिंग दीज क्वेरीज ऑल्सो दैट अभी टाइम ठीक नहीं है तो अभी रुक जाएं क्या, बाद में कर लेंगे. Surprisingly, no, I'll tell you. See, this is because, firstly, when onboarding a client, I give a very big lecture. Mm-hmm. I talk about how things are going to pan out, what are the things that the client has to bear in mind, what are the things that can happen, the worst case scenarios I talk at that time, so that nothing is a surprise for the client. So because of that, possibly, I very rarely get this kind of queries. Crypto के बारे में I don't think I have got a query from any client. Really? Yeah. किसी ने ऐसे ही पूछा होगा तो बात अलग है, but my advisory clients, they have never asked me about crypto. They are already tuned to that fight. Yes. कि they know कि ये प्रोग्राम से मेरा पैसा बनने वाला है. एंड पैसा बनना मतलब क्या, मेरी जो इच्छा, आकांक्षाएं, मेरे सपने, जो कुछ है वो फुलफिल होने चाहिए. दिस इज व्हाट मनी इज फॉर, राइट. तो वो किसी भी तरह हो जावे, मुझे क्या. सो बेसिकली मनी हैज टू बी ट्रीटेड लाइक दैट. इट्स अ टूल कि ये मुझे मेरी जो सपने हैं वो पूरे करने के लिए है. उससे ज़्यादा हो कम हो, वो बैंक में, कम नहीं, ज़्यादा हो तो वो बैंक में पड़े रहेंगे, उसका मुझे कुछ आनंद कुछ नहीं है. हाँ, because you have not linked it to any correct goal as such. So in your plan, that is the main thing, that these are the goals. So you bring about, you let the investor put across to you that these are my aspirations. Exactly. Yeah. And ये बात, of course, as I said, ये onboarding के समय बात होती है, but I reinforce these talks with whenever I meet, for whatever annual review or any meeting that we have required, whenever it is required, I reinforce these points. Right. So, I mean, as an advisor, how do you measure your success rate? Suppose you have, let's say,
100 clients or whatever, how do you measure your success? Okay, so firstly, Whichever terms. ना तो बात ये है कि if my client is having a smooth financial journey and he is able to fulfill all his milestone goals whenever those goals come about, that's success. But I can give you one example. Okay, so we used to have a newsletter. Now we have stopped. So it was between 2016 to 2020 we were running that newsletter. It was initially a fortnightly, then it became a monthly because it was taking a lot of our time. So in that newsletter we used to have a blog article, a video, a mind map, and a lot of informative, sort of nuggets of information. So when we started this, we used to email them to our clients, mainly some prospects, and then I would post it on social media. I did that very sporadically, but it used to go. So I wanted to know the opinions of people, what they thought about it. So I had asked one of my clients, what do you think of that? Are you receiving my newsletter? She said yes. So then I asked her, what do you think of that? She said, I'm not looking at it. Why? Because you are the one who's looking after my this. Why do I need all this information? That actually made me very happy. Exactly. So that showed a lot of trust and disinterest in the other things. Actual completely. detail of Yeah, so आप देख रहे हैं ना, बस मुझे और चिंता नहीं है. That was a big vote of confidence, I thought. Exactly. I think that is the real achievement, in the sense that the client has actually put his trust in you, and probably just during reviews then there is a interaction wherever it is required. Yes. Excellent. We talk about a brief about mutual funds, because a lot of clients feel that mutual funds are a little safer way of dabbling into the stock market, or indirectly you can say. Where does that fit in our scheme of things? No, it fits right. It fits right in, because I talked about stock market. I talked about safe investments. Right. How do you invest that money? We don't have expertise of stock market. Stock market expertise, stock picking expertise is a very, very specialized subject, right? And that also is industry specific. Right. So if I am an analyst and a researcher in a particular industry, let's say pharma, I can't recommend IT stocks. I don't have the expertise, right? I don't have the domain knowledge, right? So imagine if, as an individual investor, if I have to recommend you a portfolio of stocks, कैसे मैं बताऊंगा? किसी और का research ही होगा वो, right? So we don't have that expertise. So I never talk about stocks. I tell my clients I don't understand stocks, okay? And that's the reason we have mutual funds. Mutual funds में जिनको understanding है stocks के बारे में, उन्हें fund manager appoint किया जाता है. They are there for that purpose. They have the expertise. They have the wherewithal, paraphernalia. उनका research department वगैरह रहता है. They are specialized to do that job. Correct. And at a very low cost. So mutual fund is the best way to invest in the stock market, okay, through these schemes. Achha, the other end of it is the deposits and bonds, okay. उधर भी वही है. मैं safe investment मतलब क्या? People think only of bank deposits, nothing else, okay. Government bonds भी हैं, but वो मैं, to the common man it is not really that accessible, okay. And again the same thing, मैं बैंक में डालूंगा, I carry the risk of one bank. Of course I know people will say nationalized bank है, but there are many who for that extra 1% put money in those cooperative banks and stuff, and we have heard a lot of those banks going under, okay. तो fixed में safe money is also not safe, right? तो उसके लिए भी म्यूचुअल फंड्स में देयर इज ए कैटेगरी ऑफ फंड्स कॉल्ड डेट फंड्स, राइट. तो वो फंड्स में आप डालो, कोई भी एक लिक्विड फंड में डालो या
शॉर्ट टर्म फंड में डालो, उसमें आपको एक स्कीम में पैसा डालने से आपको एक 10 अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स का एक्सपोजर मिल जाता है, तो वो डाइवर्सिफाई होता है। जैसे मैंने ये बताना रह गया कि इक्विटी फंड्स में भी मैं एक इक्विटी स्कीम में डालूं, मुझे 30-40 कंपनी का पोर्टफोलियो ऑटोमेटिक मिल गया है। 5,000 रुपया डाल के भी आई एम होल्डर ऑफ या बास्केट ऑफ इक्विटी। इट्स द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट। I wouldn't in fact recommend people to invest directly at all. Yeah, because generally you will not have that expertise, as you said, in different areas and different industries. So it is very difficult. It will probably be mostly based on some tip that you have received. Yes. And that guy who's giving you the tip also has received it from someone else. Most likely. Most likely. Yeah, I guess so. I mean, that way, as a vehicle, mutual funds probably is a very nice and a liquid asset wherein you can redeem and get your money quickly. Yes. So if I have to compare with the deposit, debt funds will give you money immediately. Of course, कभी-कभी 6 महीने का लॉक इन, 3 महीने का लॉक इन कई फंड्स में रहता है, बट अदरवाइज इट्स अ वन डे थिंग। बैंक में डिपॉजिट भी पैसा आपको तुरंत मिलता है, बट वहाँ इफ़ यू केप्ट इट फॉर 1 ईयर एंड इफ यू आर विड्रॉइंग आफ्टर इवन 11 मंथ्स, उसमें इंटरेस्ट रेट कटौती होती है। इट्स लाइक यू हैव ब्रोकन अ कॉन्ट्रैक्ट, सो यू विल नॉट गेट द प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट रेट। वेयर एज हियर वो डेट फंड भी मे बी परफॉर्मिंग सेम एज द फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट, पर उधर 11 महीने के बाद आप पैसा निकालो, आपका कुछ कटता नहीं है, यू विल गेट द सेम रेट ऑफ रिटर्न। लिक्विडिटी पार्ट इज मच बेटर। करेक्ट। एंड दे आर ऑल गवर्न्ड बाय लॉज, सो that part is taken care of in any case. Yes. Great. Any quick 1 or 2 sentences you would like to mention to investors about do's and don'ts, like any simple things to follow, because do's and don'ts का list तो बहुत लंबा हो सकता है, but any tips you would learn to tell the investors? So I may summarize what I have said by saying कि first is make a budget. Okay, expenses आपके गौर करो कि क्या आपके एक्सपेंसेस हैं, कितने हैं, कहाँ आप कटौती कर सकते हैं एक्सपेंसेस विदाउट एक्चुअली रियली अफेक्टिंग योर लाइफस्टाइल, एंड सो दैट यू अराइव एट अ सेविंग्स फिगर। इन्वेस्ट दैट मनी डिपेंडिंग ऑन कितना लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा, कितना शॉर्ट टर्म के लिए जाएगा, इनटू इक्विटी। नाउ स्टॉक्स नहीं, मैं इक्विटी बोल रहा हूँ, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बैलेंस जो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, इमरजेंसी का पैसा, वो सब डेट फंड्स में जाएगा, और इक्विटी फंड्स का पैसा लॉन्ग टर्म के लिए है। आपका छोटा बच्चा है आज 2 साल का है, 1 साल का है, उसको 17-18 साल के बाद आपको कॉलेज में कहीं परदेश भेजना है या जस्ट प्रोफेशनल कोर्स के लिए भेजना है, द मनी रिक्वायर्ड इज़ बिग, तो तभी के लिए वो पैसा है, राइट? आपके रिटायरमेंट के लिए वो पैसा है। 10 साल के बाद और कुछ करना है, समझो बड़ा घर लेना है, घर छोटा हो रहा है, बड़ा घर लेना है, पर वो 8-10 साल के बाद आपको पैसा इकट्ठा करके करना है, तो वो पैसा उसके लिए है। छोटी छोटी गाड़ी लेने के लिए या ऐसे कुछ क्या बोलते हैं, अय्याशियों के लिए वो पैसा नहीं है। So you link it to yes. और वो डिसिप्लिन होनी चाहिए कि वो पैसा मैं वहाँ रखूँगा, उसको हाथ नहीं लगाऊँगा, और जो मैंने मेरे सेविंग्स में से वो ईयर मार्क किए हैं उसके लिए वो वहाँ वैसे ही जाएंगे। ओके, एक्टिवली लुक फॉर इंक्रीजिंग दैट मंथली, वो जिसको हम SIP कहते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान, वो म्यूचुअल फंड। ओके, दिस इज़ वन अदर रीज़न फॉर इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड में ये SIP करके प्रोडक्ट है which is ensuring that you don't have to every month look at cutting a check. Automatically बैंक अकाउंट में से पैसा जा रहा है, एक डिसिप्लिन आ रही है उसकी वजह से, पर वो भी आपको हर साल एक बार देख के whether you can increase that SIP you must see. ये छोटी चीज़ें करो, I think most of the things you are then doing right. I guess so. हैं छोटी चीज़ें ही, बट उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करने से probably financial awareness and financial anxiety दूर करके we can probably move in the the anxiety की बात आप कर रहे हो ना, तो anxiety के लिए you must engage a financial advisor, because otherwise if you do this you'll do well, but दिमाग का क्या करें? अभी कोविड जैसा सिचुएशन आया, आप सोचो 2020 मार्च अप्रैल में क्या सिचुएशन थी, मार्केट तो गिर गया था 50% ज़्यादा,
तो उतना गिर गया था। और तभी अफवाहें तो फैल रही थी। इनफैक्ट अफवाहें क्यों, देर वेर पीपल शेयरिंग डेटा, इनफ डेटा, लाइक यू नो कि अभी ये तुम्हारा लॉकडाउन कितना चलेगा मालूम नहीं, द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज वैक्सीन, जनरली the vaccine takes at least 18 months to 2 years, Right. so ये 2 साल ऐसा रहना पड़ेगा, ये सब दिमाग में था। तो मार्केट किधर जाएगा ये तो था। तो इस ऐसे टाइम में यू नीड ए हेल्पिंग हैंड which is provided by the financial advisor. Correct. No, very rightly said, because these are things which somebody from the outside perspective only Correct. can guide you. Correct. You may be very smart in your own field, but थोड़ा सा coaching बाहर से हो जाने से I think it just adds on and then probably secures the path. Thank you so much for your time today. Thank you for We having had a me. lovely session and I hope it is of information to all the viewers as well. Thank you so much. Thank you for watching the Investwell Show. We hope it was informative for you. Feel free to share this with your friends and see you next time.